टॉपिक इज कि हमारे पाकिस्तान एंड अमेरिका ओके as the most of the old students they are absent, so I would always first of all define the nature of relationship between the countries. For example, you have 4 neighbors, but with every country you have a different sorts of relations. If I say what about India, so you have a different kind of relations. When I talk about Afghanistan, you have a different sort of relations. When I talk about Iran, you have a different sorts of relations. When I talk about China, you have different sorts of relations. So this is first of all, right? It's they're really, we are full of contrast. That with every country we have a different sort of relation, and it's so unfortunate that we have not been able to establish friendly relations with all the neighbors. अगर friendly relations established होते, तो probably we would have been a different nation. We would have prospered more, we would have developed more, we would have a better image internationally, we would not have succumbed to terrorism, extremism, and all kind of evil problems with which the society is facing. Because that our neighbors, most of our neighbors, they were evils, they were not friendly, they refused to recognize the existence of Pakistan. They were hostile to Pakistan. They pursued anti-Pakistan policies. So the problem with Pakistan was that with your limited resources, you had to focus more on what? Defense. For your security, for your survival, because of your bad neighborhood. And that's why you received very little amount for the socio-economic improvements. Socio-economic means कि ना infrastructure बना सके, ना सड़कें बना सके, ना बिजली दे सके, ना एजुकेशन दे सके. कि बलूचिस्तान का है कोई लड़का, आप है ना, तो बलूचिस्तान में तो इंस्टीट्यूशन भी नहीं दी है, वो आपने यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं दी, इंडस्ट्री भी नहीं दी. तो ये एक बैकग्राउंड है कि जिसमें हमने एग्जिस्ट किया है. और अगर मैं आज के सिनेरियो में आऊँ तो स्टिल वी आर इन ट्रबल. वी आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पावर, वी आर स्टिल अ सिक्योरिटी स्टेट trying to survive. Our only agenda, unfortunately, we don't have economic agenda. We don't have any other political objective. We don't have any other adventurous agenda internationally. Our only agenda, right, it's that we have to survive. How to survive against Indian intentions and how to survive against your bad neighbors. So this problem still exists today. You became nuclear power just because of India. You could not flourish just because of India. You economically could not develop yourself just because of India. So had you been at a different place, now let me take you to Europe, Switzerland. Like Pakistan, Switzerland has also 4 neighbors. If you see the map sometimes, you will see it has a beautiful geography. A small country surrounded by 4 neighbors. And all the neighbors are friendly. All the neighbors are hostile, docile. Docile कहते हैं innocent. So they don't have military force. They do not need to spend on defense. समझ में आई बात? तो उनका सारा एजेंडा क्या है कि भाई चलो इकोनॉमी बनाओ, इनोवेशन करो और जॉब्स दो और एजुकेशन पे फोकस करो. सो दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड. देयर पर कैपिटा इनकम कहते हैं एक साल में एक शख्स कितने पैसे कमाता है. तो दैट इज राइट $80,000 पर एनम. $80,000. हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है पाकिस्तान की?
कुछ को आइडिया है? 1,600. Now it is 1,800 according to the latest economic survey of Pakistan. $1,800 only. So this is because of your location. This is because of your geography. आपको घर ऐसा मिला जहाँ पे आपके हमसाए अच्छे नहीं थे. तो you can change your friend but you can't change your neighbors. Is it so? तो नेबर्स तो नहीं चेंज हो सकते. यू हैव टू लिव विद योर नेबर्स. अच्छे हैं तो दिस इज ब्लेसिंग, अच्छे नहीं हैं तो दिस इज योर बैड लक. सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान. क्लियर? तो इसलिए अब अफगानिस्तान इज द मुस्लिम कंट्री बट यू नेवर एंजॉयड कंफर्टेबल रिलेशंस विद अफगानिस्तान. अफगानिस्तान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैड टू रेज टू ऑब्जेक्शन कि नंबर वन, यू आर आर्टिफिशियल स्टेट, योर बाउंड्री इज इलीगल, your boundary is not legitimate, and your boundary has been carved right on the territory of Afghanistan. So we don't accept you. Your whole KP, right? It was part of Afghanistan. Your whole half of Balochistan, it was part of Afghanistan. Your whole FATA, it was part of Pakistan. And territory up to Multan, this used to be Afghanistan. So you have been created illegally. We don't recognize you. So you had a problem number one, an Islamic state refusing to recognize Pakistan. And the second problem, right, it collaborated with India because India was also against your existence, and they both created the problems for you from the very beginning. And the third thing, if somebody remembers that we decided to ally with one superpower in 1940s. At that time, there were two superpowers in the world. Soviet Union, जिसको अभी कहते हैं Russia, and America. And you decided to ally with America, and you ignored Soviet Union, which was in your neighborhood. You ignored it. Soviet Union also wanted to cultivate relations with you. But you decided to go to America. And then what happened? Soviet Union also turned against you. So now you had three important countries in your neighborhood who were non-cooperative with you and who pursued the policies to destroy Pakistan. Soviet Union, America, and Afghanistan. So that was the old story. And coming to the Taliban government, now Taliban, here we are. Taliban became the rulers of Afghanistan in August 2021. अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल है. Who are Taliban? Who were Mujahideen? What is difference between Taliban and Mujahideen? तो अगस्त में तालिबान आते हैं और वो टेक ओवर करते हैं अफगानिस्तान को. अब उससे पहले कौन थे और तालिबान कौन थे? तालिबान आप समझ लीजिए ये मुजाहिदीन थे. अच्छा, मुजाहिदीन कौन थे, कहाँ से बने? मुजाहिदीन बने थे इस फेज में 1979 to 1989. रिलेशन हमारे ख़राब रहे. तालिबान बने 1978 to 79 और दिस बाउंड्री between Afghanistan and Pakistan, this was declared illegal by Afghanistan, and the name of this boundary is Durand Line. Durand Line. और आज तक ड्यूरेंट लाइन का इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान. और सेकेंडली वो कहते हैं कि ये जो एरिया आपने हमारा काबू किया है इसको सरेंडर करें. तो दीज टू डिमांड दे स्टिल एग्जिस्ट टुडे इवन योर तालिबान regime. Correct? Now, what happened in 1979, अब मैं स्किप कर रहा हूँ बाकी हिस्ट्री को. 79 में जो एक सुपर पावर थी ना, सोवियत यूनियन उस वक़्त, राइट, जिसका एजेंडा था एक्सपेंशनिज्म,
जिसका एजेंडा था एडवांसिंग इट्स आइडियोलॉजी, इट वाज कम्युनिज्म। तो सोवियत, ये सारा सोवियत यूनियन था यहाँ तक, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, ये सारा यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1979, wanted to convert Afghanistan into a communist state. And then the Soviet Union next objective was to take over Pakistan. And Soviet Union wanted to reach the warm waters of the Arabian Sea. So when Soviet Union attacked Afghanistan, so two countries, they decided to confront the Soviet agenda, USSR agenda. One was Pakistan, because Pakistan did not want to be a communist state. Pakistan did not want to be the next target of Soviet invasion. So Pakistan decided to confront. And the second country was the second superpower, that is America. American agenda was also that we have to keep USSR at an arm's length. We have to stop and contain Soviet ideology, that is communism. So America was also upset when an independent country was invaded, and therefore America decided again to fight the Soviet forces. How? It decided to have a collaboration with Pakistan. So for the time being, both had the same agenda. America wanted to defeat Soviet Union. We also wanted to defeat Soviet Union. So it was decided that what Pakistan will do and what America will do. So you were given funding and you prepared मुजाहिदीन कि जी ये मुजाहिदीन बनाओ, इनको कहो जिहाद करें, ये जिहाद के नाम पे हमें बहुत मुजाहिद मिलेंगे। इनको कहो कि अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें काफिर आ गए हैं और जिहाद स्टार्ट करो और सोवियत फोर्सेस को डिफीट दो। और पाकिस्तान डिसाइडेड टू प्ले दैट डर्टी रोल फॉर अमेरिका। ओके, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने मुजाहिदीन बनाए। हमने तकरीबन 1 से 1.5 लाख मुजाहिदीन बनाए। 80 से ऑनवर्ड्स बनाते रहे, उनको जंग में झोंकते रहे, वो यहाँ पे लड़ते रहे। और 1987 में सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इट्स डिफीट कि इट वाज अ ब्लंडर एंड दे डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। सो 87 वाज अ इम्पॉर्टेंट deadline that Soviet Union of superpower was defeated by the Mujahideen. And not only that the superpower was defeated, it was broken into 15 small states. Kyrgyzstan अलहदा हो गया, ये आपका ये काज़ाकिस्तान अलहदा हो गया, ताजिकिस्तान अलहदा हो गया, उज़्बेकिस्तान अलहदा हो गया, तुर्कमेनिस्तान अलहदा हो गया, इधर से जॉर्जिया आर्मीनिया अलहदा हो गया। तो ये रशिया है और बाकी जो आपके पास है, बाकी तो 15 मुल्क इंडिपेंडेंट हो गए। तो रशिया ब्रोक डाउन एज अ सुपर पावर, एज एन एम्पायर। ये एम्पायर सोवियत एम्पायर था, बहुत बड़ी रियासत थी। तो और तो ये तो मुजाहिदीन ने ये विक्ट्री अचीव की। और उसके बाद ये मुजाहिदीन की आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए एंड दे कुड नॉट रूल अफगानिस्तान इन अ पीसफुल मैनर। आपस में डिवीजन हो गई, फूट पड़ गई मुजाहिदीन में। तो अफगानिस्तान में जब सोवियत फोर्सेस निकले और मुजाहिदीन ने जब टेक ओवर किया, तो मुजाहिदीन में फूट पड़ गई। तो अफ़गानिस्तान क्योस का शिकार हो गया, इंतशार का शिकार हो गया। करेक्ट? उस वक़्त एक नया ग्रुप उभरता है, वो भी मुजाहिदीन होते हैं, लेकिन उन मुजाहिदीन को हम नाम देते हैं तालिबान। तो तालिबान कौन थे? A new generation of the mujahideen.
जो उस वक़्त वॉरफेयर नहीं लड़ रहे थे और बाकी पाकिस्तान और इधर उधर जो के वो सेटल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए, हमें टेक ओवर करना चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान को रूल करना चाहिए। तो ये मुजाहिदीन की सेकंड जनरेशन है, या आप कह दीजिए मॉडर्न वर्जन ऑफ द मुजाहिदीन। द तालिबान दे इमर्ज्ड एंड दे एडवांस्ड इनटू अफ़गानिस्तान एंड दे कैप्चर्ड इट। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो पहला टाइम रूल आया वो कब था? 1996 to 2001. Now have you understood who are Taliban? Okay, Taliban. अब उसके बाद अमेरिका ने अटैक किया 9/11/2001 को अफ़गानिस्तान में। कोई आइडिया है क्यों? क्योंकि अमेरिका पे अटैक हुआ था, उन्होंने कहा ये यहाँ से हुआ है, तो अमेरिका ने यहाँ पे अटैक किया, तालिबान गवर्नमेंट को रिमूव किया कि तालिबान वर इन्वॉल्व इन अटैक ऑन अमेरिका, और वहाँ पे नई हुकूमत लाने की कोशिश की। अमेरिका 20 साल अफ़गानिस्तान में फंसा रहा, 20 साल फंसा रहा, 2001 से 2021 तक। 20 साल में अमेरिका दूसरी सुपर पावर है, ये भी कुड नॉट अचीव द विक्ट्री इन अफ़गानिस्तान। ये आए थे कि मुजाहिदीन जो तालिबान हैं उनको हम तहस नहस कर देंगे, हम उसामा बिन लादेन की ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल-कायदा, हम उसको पाश पाश कर देंगे। अमेरिकन दे कुड नॉट। And after 20 years, America decided to withdraw empty-handed. So America also was humiliated in Afghanistan. पहले सुपर पावर USSR and now America. And look at the irony of the nature. As soon as the Americans they withdrew Afghanistan in August 2001, Taliban were back in Afghanistan. तो तालिबान जिनको निकालने आए थे 20 साल के बाद, वो 20 साल में नहीं निकाल सके, और जैसे ही वो जाते हैं, मजबूर होकर जाते हैं, तालिबान वापस। नाउ दे आर रूलर्स। अब आइए हमारे साथ रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप हमारे नॉट गोइंग गुड बिकॉज तालिबान आर नॉट डिपेंडेंट, नॉट रिलायबल। First of all, they are supporting the terrorist groups in Afghanistan which are operating from its territory against Pakistan. You might have heard the name of TTP, Tehrik-i-Taliban of Pakistan. You might have heard the name of ISK, Islamic State of Khorasan. You might have heard the name of Al-Qaeda. And you might have heard the name of some other terrorist organization. So Afghanistan के अंदर, right, they all have their sanctuaries, अपनी पनाहगाहें हैं. And the problem between Pakistan and Afghanistan, it has, right, become more sensitive that some of the terrorists, particularly TTP and ISK, they operate from Afghanistan against Pakistan. And so relations have further deteriorated in the Taliban regime. तालिबान जब से आए हैं, ये हमारे ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 100 टाइम्स बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन और ख़राब हो गए। हम अफ़गानिस्तान को कहते हैं कि आप एक्शन लें, अफ़गानिस्तान रिफ्यूज़ेस। अफ़गानिस्तान डिनाई करता है कि देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी टेररिस्ट ग्रुप। हमने अफ़गानिस्तान के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स भी की हैं, कई दफ़ा हमारी बॉर्डर झड़पें भी हुई हैं जिसको अंग्रेज़ी में स्क्रिमिशेस कहते हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड देन देयर आर अदर इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड द तालिबान। वी हैव ऑलमोस्ट 44 lakh Afghan refugees in Pakistan, and we decided to expel them because they were involved in terrorist activities. They were supporting the activities of terrorism.
They had collaboration with India and Afghanistan. So Pakistan decided to withdraw, to expel them. And so far we have expelled 9 to 10 lakh Afghanis, but the remaining refugees, they have not gone. So this has further put pressure between Pakistan and Taliban. Taliban don't want that we should send back the mujahideen. फिर हमारा इनके साथ एक वाटर इशू है, वो अभी मैं उस पर टेप पे बात नहीं कर सकता. फिर हमारा उनके साथ मसला ये है कि they, although they are Muslims, Taliban, but they had very good terms with India. So again, this factor that they were pro-Indian, it affected Pakistan because India, right, was present here. And so India was destabilizing Pakistan from here. India was supporting these terrorists from here. So India is supporting TTP, India is supporting ISK, India is supporting BLA, Balochistan Liberation Army in Balochistan. Now let's do the latest development. अब सूरत-ए-हाल ये हुई है कि अभी चंद महीने पहले there was another development between India and Afghanistan. Now, India is basically an economic country. India is pursuing its economic agenda, and India has obviously its eyes on the natural resources of the other countries, on the minerals and the oil and gas. Okay, so India wanted to capture or take control of those resources. So in this regard, let me tell you, Afghanistan in this region is full of natural resources. It has trillions of dollars of oil, gas, and minerals. So although Taliban, they are backward, right? Nobody wants to continue relationship with the Taliban. But the thing is, that the place where they are sitting, that place is very productive, very useful. And every big country in the world has its eyes on Afghanistan, on the resources of Afghanistan. So China is exploiting the natural resources of Afghanistan, and Taliban, they are allowing them that yes, we also want economic business. We also want these kind of engagements because we are short of the cash. And so China is exploring over there. India also wanted to explore similar resources. And now America, once again, Donald Trump wants to come back here in Afghanistan to capture its natural resources. And that's why now America is again focusing on Pakistan. That through Pakistan, we can have access to Afghanistan. And similarly, Russia is again focusing on. So now these countries, right, they want to have goodwill, they want to have good relations with the Taliban for the same reason. And for the same reasons, Russia has taken the lead, that it has recognized the government of Taliban. And so the other countries now, they are also giving a second thought that we should also accept the Taliban. Now, Taliban, they were not you can say, favorite groups anywhere in the world. Nobody wanted Taliban because why? All the countries, or the most of the countries, they were against Taliban because of their extreme agenda. एक तो their human rights violations, दूसरा no rights to the women, no right to their for education, and the dress code for the ladies, and banning of every kind of institutions. So there are a lot of restrictions on the women. Women का तो ये हाल है कि वो they are kept as if they are kept, if the birds are kept in the cages. तो ये वाला हाल है उनके women का. तो secondly, उनका जो Islamist agenda है, that is very extreme. इतना extreme agenda आपने दुनिया में कहीं और नहीं देखा कि जी एक्सट्रीम पनिशमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं. वो आपकी वो किलिंग करते हैं, वो सोसाइटी के सामने लोगों को मारते हैं, वो कोड़े मारते हैं, संसारी करते हैं. तो एक्सट्रीम पनिशमेंट्स हैं. तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड डज नॉट वांट दैट these kinds of extreme rulers, they should continue.
So they are not concerned about the human rights. Thirdly, अफगान तालिबान जब अभी आए थे ना तो उन्होंने एक ग्लोबल कमिटमेंट की थी कि we will not allow our territory to be used for terrorism, and they are not fulfilling their promise. And the terrorism is being promoted, and particularly against Pakistan. Okay, so they have not fulfilled their promise. तो चौथा उन्होंने ये कहा था तालिबान ने जब आए थे कि हम सबको साथ में लाएंगे, जो बाकी ग्रुप्स हैं ना, जो नॉन तालिबान कम्युनिटी है। तालिबान मेजॉरिटी पश्तून से हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान के अंदर और भी ग्रुप्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महाजर हैं, बलोची हैं, पठान हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर ताजिक हैं, हज़ारा हैं, उज़्बेक्स हैं, तो ये पठान हैं। और पठान ज़्यादातर जो है वो मुजाहिदीन है, पठान ज़्यादा तालिबान हैं। तो जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं ना, जो ताजिक हैं वो है, तो दे आर अगेंस्ट तालिबान, दे आर अगेंस्ट सुन्नीस, ये सुन्नी है। तो इसलिए वहाँ पे चूँकि अब इसका मतलब ये है कि तालिबान की हुकूमत का मतलब क्या है, वहाँ पे इस वक्त हुकूमत सिर्फ एक कम्युनिटी की है, और वो कौन है? सुन्नी मुस्लिम या पठान। और कौन एब्सेंट है? माइनॉरिटीज़ जो हैं। तो इन्होंने कहा था हम सबको मिलाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया था, वी विल इस्टेब्लिश इंक्लूसिव गवर्नमेंट, विच मीन्स इंक्लूडिंग उज़्बेक, इंक्लूडिंग हज़ारा, इंक्लूडिंग ताजिक्स एंड एवरी कम्युनिटी। क्योंकि सारे होंगे तो पीस आएगा ना भाई। अगर सारा पाकिस्तान अगर पंजाबी टेक ओवर कर लें तो बाकी 3 सूबे तो रेजिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो तो नहीं है, वो तो अपोज करेंगे कि हमारे राइट्स कहाँ हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अफगानिस्तान हैव नॉट फुलफिल्ड द प्रॉमिस, सो दे बैक्ड आउट फ्रॉम देयर कमिटमेंट्स टू लेडीज राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एक्सट्रीम पनिशमेंट्स, एक्सट्रीम एजेंडा, एंड द इंक्लूसिव गवर्नमेंट, and we will not allow terrorism. They have not fulfilled their promise. So the world turned against the Taliban. ठीक हो गया, और ज़्यादा सख्त हो गया। लेकिन अब इसके साथ साथ now the world is shifting towards Taliban because of the economic interest, because of the resources of Afghanistan. And so that's why now most of the countries they have started taking interest in cultivating the relations with them and having economic engagements and economic activities. And so that is the latest story. उस हवाले से एक लेटेस्ट में आपको बताने लगा था, मई के अंदर इंडिया और ये है इंडिया, इनकी मीटिंग हुई and they try to extend their cooperation. इंडिया है, तालिबान, एक एंटी पाकिस्तान डेवलपमेंट थी। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट खबर सुनाने जा रहा हूँ, और लेटेस्ट खबर ये है कि अभी इस चंद हफ्ते पहले इस मीटिंग के बाद देयर वाज अनदर डेवलपमेंट, एंड दिस वाज अ न्यू डेवलपमेंट, वेरी स्ट्रेंज डेवलपमेंट, दैट पाकिस्तान एंड तालिबान दे डिसाइडेड टू एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, दे डिसाइडेड टू इम्प्रूव रिलेशंस। यू टर्न, कैसे यू टर्न? विद द हेल्प ऑफ चाइना ने कहा आज इधर आ जाओ, बिकॉज चाइना वांट्स स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। स्टेबिलिटी क्यों चाहता है? क्योंकि वो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो अब इन मुल्कों के ममालिक के जो एजेंडाज हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो तो हम जाके एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करें और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। नाउ व्हाट वी हैव सीन द एक्सेस, एक्सेस कहते हैं बैवर, नया ब्लॉक बन गया। ये नया ब्लॉक बन गया है, पाकिस्तान हमारे साथ आ गया है अफगानिस्तान के साथ, और चाइना ये नया ब्लॉक बन गया है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से आउट हो गया, और इसमें अफगानिस्तान ने कहा है हम टेररिज्म नहीं होने देंगे, लेकिन हो रहा है। अब वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये नया ब्लॉक बन रहा है, और इस नए ब्लॉक में एक और मुल्क आ गया है और वो है बांग्लादेश। अब चेंज क्या आ गई है? पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बाद एक चेंज तो ये आया है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स रेपुटेशन
as a mini power in South Asia. Number two, India has lost its international image. कि इंडिया जो है वो इनविंसिबल था, इंडिया नाकाबिले तस्खीर था, इसको शिकस्त नहीं हो सकती थी, एंड इंडिया हैज़ बीन डिफीटेड बाय पाकिस्तान. तो इंडिया इज इन ट्रबल. इंडिया सीम्स टू बी आइसोलेटेड. इंडिया के ऑलरेडी चाइना के साथ बहुत डिस्टर्ब रिलेशंस हैं. इंडिया के पाकिस्तान के साथ डिस्टर्ब रिलेशंस हैं. इंडिया और ये बांग्लादेश, ओके, ये जो कि इनकी हमेशा से इनका दामन चोली का साथ रहा है, इसको कहते हैं हैंड ग्लव रिलेशनशिप. नो दैट इज इन जेपर्डी, क्योंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान और चाइना के साथ आ गया, एंड नाउ इंडिया इज आइसोलेटेड इन द रीजन. वी कैन डिबेट. और जहाँ तक अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा है कि यू आर अवर फ्रेंड. दे हैव गिवन लंच टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और अमेरिका में कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच, देयर इज़ बिजनेस. तो बिजनेस क्या है? अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ करना है, वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करना है, मिनरल्स के ख़िलाफ़ यूज़ करना है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ यूज़ करना है. अमेरिका ने 3 चीज़ के लिए पाकिस्तान को यूज़ करना. चलिए मैं आपको बता देता हूँ. लंच इसलिए कराया, वरना वो घुसने नहीं देते. जो आपका जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है ना, उसको वाइट हाउस में नहीं घुसने देते. कहते हैं पेंटागन जाओ. पेंटागन जो है वो आर्मी का हेड ऑफिस है, वो CIA का हेड ऑफिस है. तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये CCC है. नंबर 1, काउंटर टेररिज्म, कि अफगानिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है ये बंद करना चाहिए. खिता भी अनस्टेबल है, और सेकेंडली ये terrorism, it can be exported to America as well. So counter-terrorism. Once again, America wants to work on counter-terrorism. Secondly, cryptocurrency. ये अमेरिका ने जो तूफान मचाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी का, वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कारोबार है. तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पर्सनल एजेंडा भी प्रमोट कर रहा है और साथ अमेरिका को भी साथ लेके चल रहा है. वो एक बिजनेसमैन है, वो उसने अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टैब्लिश की है, बिटकॉइन की, और वो उसको एक्सपेंड करना चाहता है, और उस हवाले से उसने पाकिस्तान को काबू किया है. और पाकिस्तान के अंदर जल्दी 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 क्रिप्टो लॉज भी बन गए हैं, क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई है. तो ये सब अमेरिका कर रहा है. तो ये जनाब, तो ये क्रिप्टो करेंसी, ये अमेरिकन इंटरेस्ट और डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्ट. और तीसरा सी ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी इनको पता चल गया है क्रिटिकल मिनरल्स हैं $6 ट्रिलियन के. यू नो व्हाट इज़ क्रिटिकल मिनरल? क्रिटिकल मिनरल्स ये वो एलिमेंट्स हैं, आपने लिथियम का नाम सुना होगा, सिलिकॉन का नाम सुना होगा, ग्रेफाइट सुना होगा, कॉपर सुना होगा, एल्युमिनियम सुना होगा. ये वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आजकल सारी लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रहे हैं, जो सारे मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं, जो सारी आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ हो रहे हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC, ये मल्टीमीडिया, राइट, नेम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, नेम एनी ब्लडी इलेक्ट्रॉनिक, राइट, उसमें ये मिनरल्स यूज़ होते हैं. और ये जितने नए वेपन्स हैं, ड्रोन्स, मिसाइल्स, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑटोमेटेड वेपन्स, तो जो ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, ये ईरान पे जो अटैक किए इसराइल ने, जो चुन चुन के बंदे मारे, वो सारा का सारा आर्टिफिशियल ड्रिवन वो चिप्स हैं जो यूज़ होती हैं इसके अंदर. आपके यहाँ आपके मोबाइल में भी चिप है ना, ये मोबाइल, इसके अंदर जो कितना डाटा है, और ये सारे का सारा ज़ाहिर है ये सिलिकॉन से बना हुआ है. और उसके अंदर बैटरी किसकी है? लिथियम की, आर्टिफिशियल. तो ये सारे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी है, इसमें यू नीड नॉट ऑयल, not gas, not coal, but these minerals, and we call them critical minerals, or we call them rare minerals.
अब ये रेयर मिनरल्स में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो होल्ड है वो चाइना का है। 70% ऑफ द क्रिटिकल मटेरियल दे आर डिपॉजिटेड इन चाइना, और चाइना की अमेरिका के साथ लगती है। इसलिए और अमेरिका को पता चला है कि पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन का क्रिटिकल मिनरल्स हैं। उनको तो चाहिए टेक्नोलॉजी, आपको पता है नई टेक्नोलॉजी सारी क्रिटिकल मिनरल्स पे चल रही है, और फ्यूचर में जैसे जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस होगी वो आपको ये क्रिटिकल मटेरियल और ज़्यादा यूज़ होगा। तो अमेरिका का ये तीसरा सी है क्रिटिकल मिनरल्स। अमेरिका वहाँ पे आपके साथ डील करना चाहता है और आपका क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोर करना चाहता है, और वो क्रिटिकल मिनरल जो अफगानिस्तान में है वो तालिबान वहाँ से एक्सप्लोर करना चाहता है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। मैं कोई कंक्लूड नहीं कर रहा, मैं कोई इस वक्त कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा कि आप फ्यूचर किस तरफ जाएगा, बट आई हैव given you some points to understand the current development, that why Pakistan, Afghanistan and China, why they have come together, what is the agenda behind, what Taliban want. Taliban obviously want funding. Taliban wants economic activities. Taliban want that we also generate money, generate revenue, so that we can also improve the infrastructure, we can deliver to the society. And obviously today we are living in the world where economics is everything. Okay, if you are economically weak, then obviously you have I would say that you have no survival in the world. And if you are a strong economy, right, you have might. तो इस डेवलपमेंट में हम एक बड़े सिनेरियो में देखें तो वो चाइना और अमेरिका खेल रहे हैं। रीजनल सिनेरियो में देखें तो इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेल रहे हैं, और अगर लोकल सिनेरियो में देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो कि मुझे नहीं लगती कि ये फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म में चलेगी, क्योंकि उसके इस चाइना के साथ डील होने के बाद भी पाकिस्तान पे टेररिज्म के अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान हैज़ ब्लेम्ड दैट अफगानिस्तान हैज़ स्टिल नॉट स्टॉप द एक्टिविटीज़, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग the Taliban from there to promote the terrorist activities. So therefore, at the moment the relationship seems to be, or this new alliance seems to be very fragile, very weak. But for the time being, it looks that the regional dynamics have changed. India has lost, Pakistan has emerged as a powerful country, because we have militarily defeated. America has come closer to Pakistan. International world has realized that कि पाकिस्तान जो है ये नवाला तर साबित नहीं हुआ इंडिया के लिए। पाकिस्तान unexpectedly has bounced back and has given a defeat to India. And so Pakistan now is emerging close to China. Pakistan, China, Bangladesh, Afghanistan coming close to each other to make a bloc. So therefore, right, this would be a challenging issue for the Americans also, and for the Indians also.